And few of the questions with the basic concept of maxima minima was discussed in the previous class. So let us continue with the topic maxima and minima. We have a very another important example. Find the extreme values of fxy, that is x raised to power 4, y raised to power 4 minus 2x square plus 4xy minus 2y square. Now, this is the function we have, and we have to find out the extreme values of this function. We know that the first step is you need to find out the partial order derivatives with respect to x, that is 4x cubed minus 4x plus 4y. And similarly, we can find out the partial order derivative with respect to y, that is 4y cubed plus 4x minus 4y. So this is our first step. And the second step is put these derivatives equal to 0 for finding out the stationary points. And you will get that, that is x cube minus x plus y is equal to 0. 4 is cancelled throughout. And similarly, we have y cube plus x minus y is equal to 0. You can add these two equations, and by adding these two, adding, name it as equation number 1 and name it as equation number 2. You will add 1 and 2, and you will get x cube plus y cube is equal to 0. The remaining terms will be cancelled. And from this, we can write down y cube is equal to minus x cube, or y will be equal to minus x by taking the cube root on both sides. Now, put y equal to minus x in 1. So, when you put y equal to minus x in 1, you will get x cube minus 2x is equal to 0. And x can be taken common. So x square minus 2 is equal to 0. So either x is equal to 0 or plus minus square root 2. So these are the values of x. And similarly, we will get the values of y. So when x is equal to 0 here, you will get y equal to 0. And when you will put x equal to square root 2, you will get minus square root 2, and similarly plus square root 2. So these are the points, and which are said to be the stationary points or critical point. The other name is critical points. Critical points are 0, 0, square root 2 minus square root 2, and minus square root 2 and square root 2. Now these are the 3 points we have, and we have to check for the maxima and minima for all these 3 points. Now the first point is 0, 0. So let us check at 0, 0. But before this, we require P, we require Q, we require R, we require S, and we require T. And we all know that P we have already there. P and Q is already there. And P and Q are the first order derivatives. Just see. This is P. This was discussed in the previous class. This is the value of P and this is the value of Q. So these are P and Q, which we have already got. Now from this, we can calculate R. R is the second order derivative of F with respect to X. And that come out to be 12x square minus 4. Similarly, we can get S, that is the second order derivative with respect to x, y. This come out to be 4. The second order derivative with respect to y is named as t, that is 12y square minus 4. Now, you can calculate the value of rt minus s square. We know for checking whether this is a point of minima or maxima, we need to calculate
calculate this condition. This is 12y square minus 4 and minus 16. And at this point 0, 0, the value come out to be, now for 0, 0, the value of RT minus S square come out to be 0. When you put 0, 0 here, you will get 0. जब 0, 0 पुट करने पर ये वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसके लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. ये केस हमने पहले डिस्कस नहीं करा है, ये न्यू चीज है. जब भी वैल्यू ऑफ RT माइनस S स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाए, it means the further investigation is needed. This is important. We have to investigate further, and for investigating it, what we need to do, we have to find out the value of FAB minus F of A plus H, B plus K. This is we need to do. And what is AB? AB is the point 0, 0. This is all we are doing for the point 0, 0. And what will have? F0, 0. When you put 0, 0 in the given function, you will have 0 value. And when you put HK in the given function, you will have H4 plus K4 minus 2H square plus 4HK minus 2K square. And it come out to be negative sign. Together with the negative sign, we will have minus H4 minus K4 plus 2H square minus 4HK, and this is plus 2K square. And what is this? This term, this one, this is actually 2 is common, and the remaining term is H minus K whole square from this term. And for these values, these two terms, we shall have a negative sign common, and inside is H4 plus K4. Adjustment of terms यहाँ पर आपने करना है. And now just see this term. अगर तो ये term जो आया है हमारे पास, always keep same sign, तो हम कह सकते हैं सेम साइन का मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो हम उसके अकॉर्डिंगली बता सकते हैं, अगर ये नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंगली बता सकते हैं. लेकिन अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर H और K की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, तो कभी ये पॉजिटिव आ सकता है, कभी ये नेगेटिव आ सकता है. मसलन सपोज वी पुट H इज इक्वल टू 1, K इज इक्वल टू 1. तो अगर H इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1 पुट करें तो ये 0 बन जाएगा और यहां से आएगा -2. और इफ आई पुट H इज इक्वल टू 2 and K is equal to 2, or moreover K is equal to 1, so what you will get? 2 minus 1 is 1, 1 square is 1, and that is 2 minus, जब 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 16 plus 1. अल्टीमेटली ये टर्म भी नेगेटिव आएगी, दैट विल बी लेस देन 0. अब ये नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं जैसे जैसे हम वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे. लेकिन इफ वी पुट द स्मॉलर वैल्यूज, suppose I put 0.1, just see, if I put H is equal to 0.1 and K is equal to 0.01 and its square 2 times, now you know that 0.1 का raised to power 4 और छोटा हो जाएगा, ओनली 0.0001 आई थिंक सो. आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे. और K का भी 0.001 का और छोटा आ जाएगा, मुझे लगता है 4-5 जीरोस आ जाएंगे. एंड दिस विल बी व्हाट आई वांट टू टेल, दिस वैल्यू इज ऑलवेज बिगर देन दिस वैल्यू. इट मीन अल्टीमेटली दिस टोटल वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0. आर यू लिसनिंग? यस सर. अब बेटे मैं जो कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे H और K की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी तो इस टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. अब देखिए, जब बड़ी वैल्यू बढ़ते हैं तो वो नेगेटिव आ रही थी, अब अगर छोटी वैल्यूज बढ़ेंगे तो वो पॉजिटिव आ रहा है. तो कभी पॉजिटिव आ जाता है, कभी नेगेटिव आ जाता है. तो सेम साइन जब ना हो, इसको हम बोलते होते हैं
which does not keep the same sign. Same sign का मतलब either it is positive or it is negative for all small values of h and k. h and k की values के लिए either it is positive or it is negative. It does not keeping same sign. तो जब ये ऐसा condition हो तो this point is neither a point of maxima or nor a minima. So there is neither maximum nor minimum value at 0 0. तो ये पॉइंट आपके ऊपर आपकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम वैल्यू है. ओके, ये प्रोसीजर है चेक करने का. इसको बोलते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन. ये आपने चेक करना है, ये हर बार ऐसे ही करना है, यही टेक्निक लगाना है. ये आप तब करते हैं जब आपके पास RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाए. तो यू विल फॉलो दिस स्टेप फॉर चेकिंग. So this is the procedure for checking. Now, the second point we are going to check, that is square root 2, negative square root 2. And we have to find out RT minus S square. For this come out to be 12 into 2 minus 4, 12 into 2 minus 4, and negative 16. Minus 16 you have to evaluate, and this value come out to be 12 twos are 24 minus 4 20, 20 into 20 400 minus 16, that is 384. Now this value is bigger. Also we need to check r at this point, and this come out to be 20. This is bigger. और जब ये वैल्यू तो बिगर हो, 0 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू हो RT माइनस एस के, और अगर R भी पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते होते हैं दिस इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा. सो f of xy has a minimum value at this point, and the point is square root 2 minus square root 2. और we can calculate, अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f of xy at this point, that is square root 2 minus square root 2, we can calculate. That will be square root 2 raised to power 4 minus square root 2 raised to power 4 minus square root 2 square plus 4 square root 2 minus square root 2, and minus 2 square root 2 whole square, and ultimately the value come out to be negative. You can check that. So this is the procedure for finding out the maximum value or minimum value. And last point is left with us, that is negative square root 2 and square root 2. Now let us check the procedure for finding out सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है? हेलो बेटे मनीष. यस सर, अभी आ रही सर. सर आ रही है अब. हेलो. यहां तक था, यहां तक करा था हमने. यस.
अब आपने माइनस स्क्वायर रूट टू और स्क्वायर रूट टू पर आर टी यस सर। माइनस एस स्क्वायर चेक करना है, और इसकी वैल्यू फिर दोबारा से 20 ही आएगी. यू कैन चेक. आल्सो also we need to calculate the value of r for this point, and the value of r is again come out to be 12 into 2 minus 4, that come out to be 20 greater than 0. अब देखिए ध्यान से, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर तो बड़ा ही होना चाहिए जीरो से, लेकिन अगर उसके साथ आर भी जीरो से बड़ा आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है. लास्ट वाला सेकंड केस भी हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा था. एफ ऑफ एक्स वाई हैज a minimum value at square root 2 negative and square root 2. So minimum value of f of xy at this point, negative square root 2 and square root 2, that value again come out to be -8 by substituting in the function. तो इससे एक बात पता चलती है कि दो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकते हैं. अब देखो सेकंड वाला पॉइंट ऑफ मिनिमा था, ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा ही आया. अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब होता? अगर आर की वैल्यू जीरो से छोटी होती तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाना है. ये कंडीशन है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की. तो फिर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ही आ रही थी फंक्शन की. So this is the procedure to find out whether the point is a point of minima or whether the point is a point of maxima. तो ये एक तरीका है. This is the method by which we can verify or we can find out whether the point is a maximum point or a minimum point. Okay? Okay? यस Yes, sir. यस सर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास. द क्वेश्चन इज, अब ध्यान से सुनो. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है that is open at the top is to have a volume of 32 cubic meter. उसका वॉल्यूम 32 cubic meter है. This is the volume of that box rectangular. Find the dimensions of the box requiring least material of its for its construction. हमें निकालनी है उसकी डायमेंशंस. डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है, बट रिक्वायरिंग लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन. तो अगर हम माने कि उसकी लेंथ है x, ब्रेथ है y और हाइट है z, तो वी कैन फाइंड आउट वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है. यू नो इट, इज द फॉर्मूला. ओके, Yes, sir. दिस इज द फॉर्मूला यस फॉर सर। ओपन वॉल्यूम. अच्छा, दूसरी तरफ बॉक्स ओपन है ऊपर से टॉप नहीं है उसका. तो अगर उसका टॉप नहीं है, बाकी फेसेस हैं. बाकी फेसेस कितने हो गए भाई टोटल? 5. ओके, 5। 5 फेसेस. तो उसका सरफेस एरिया होएगा. अब ऊपर से अगर है ओपन तो हम क्या करते हैं, वहां से आएगा एक्स वाई, बाकी हो जाएगा 2 y z एंड 2 z x. दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दैट. अब नाउ फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z, that is 32 upon xy. Now this value of z can be substituted here, that is xy, z can be substituted, and this come out to be 32, uh, that is 2y over 32xy plus 2x, 32 over xy. So ultimately come out to be xy 64 over x, 64 over y. This will be the surface area now. Now अब इसका पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव x से y माइनस 64 ओवर एक्स स्क्वायर, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y सर आवाज नहीं आ रही है आपकी.
आवाज नहीं आ रही सर। Sir, you are not audible. For stationary points, we need to put the derivatives equal to 0. And when you put a derivative equal to 0, you will get y equal to 64 over x square of y can be substituted in this, and you will get x minus 64 over 64 square into x raised to power 4. ये y की वैल्यू इसमें आप भर करके ये निकाल पा सकते x into 64 minus x cube is equal to 0. Now either x is 0 here from this और x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4. तो ये एक तरह से पॉइंट आ जाते हैं. Therefore the points are critical points will be 4 and 4 only. आप सुन रहे मनीष? यस सर। जब आप x की वैल्यू 4 इसमें भरेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 64 ओवर 16. तो ये 4 ही आ जाएगा, इसलिए ये पॉइंट बना. लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं भर सकते. अगर 0 भर देंगे तो 64 अपॉन 0 इनफाइनाइट आ जाएगा. तो वो तो किसी भी बॉक्स का डायमेंशन इनफाइनाइट में हो नहीं सकता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ फाइनाइट वैल्यू. तो एक ही हमारे पास पॉइंट बना है 4 4. अब 4 4 पर हमने चेक करना है, और 4 4 के लिए शुरू में देखिए लीस्ट मटेरियल की बात चल रही थी. अब लीस्ट मटेरियल के लिए वी नीड टू कैलकुलेट डेल स्क्वायर एस बाय डेल एक्स स्क्वायर. अब हमने यहाँ पर एफ नाम दे दिया था. दिस फंक्शन इज एफ या एस. तो एस है, एफ ना लेकर चलिए क्योंकि सरफेस एरिया की बात हो रही है ना. सरफेस एरिया लीस्ट करना हमने. तो आर इज देयर, that is 128 over x cube. S will be there, that is del square s by del x del y, that is 1. T is there, del square s by del y square, 128 over y cube. Therefore RT minus s square come out to be 128 square over x cube y cube minus 1. This is the value. And at the point जब हम 4 4 भरेंगे पॉइंट इस पर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3 at the point 4 4. Also the value of r we need to calculate 128 upon x cube, and this value come out to be 2, which is greater than 2. अब देखिए जब r भी 0 से बड़ा हो तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है. So therefore S means surface area. S is least when x is equal to 4 and y is equal to 4. यही पॉइंट आया था. Is it true? यही पॉइंट आया था ना आपके पास. Yes, sir. तो लीस्ट आ गया ना, इससे मिनिमम आ गया. और शुरू में हमने z फाइंड करा था, और z के लिए था 32 over xy. तो 4 into 4 that come out to be 2. So this is the dimension of the box, 4 4 and 2. ये बॉक्स की डिमेंशन है जिसमें लीस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगेगा, और वो बॉक्स ऊपर से टॉप से ओपन है. तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बॉक्स से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड, सरफेस एरिया से रिलेटेड, जिससे हमें बॉक्स की डायमेंशन पता चलती है. क्योंकि बॉक्स में हमारे पास तो सरफेसेस हैं, फेसेस हैं, और 6 फेसेस आर देयर इन द बॉक्स, एंड we have to consider the least material for the construction of this box.
that is y, and it comes out to be least. Just see, the value of r comes out to be greater than 0. This one r comes out to be greater than 0, और जब r 0 से बड़ा है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, टुगेदर विद rt माइनस एस स्क्वायर, दोनों ही 0 से बड़े आ गए, तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है. So this is the minimum surface area of the box. So I will continue in the next class now. Thank you very much. Any Thank you, question you sir. want to ask? No, sir.